The word creativity is frequently used by almost everyone in every now and then, and we also understand the meaning of creativity. क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है कि समथिंग हैज टू बी न्यू एंड वैल्यूएबल, ये उसका डेफिनेशन है. क्रिएटिविटी डजंट रेफर ए प्रोडक्ट ओनली, बिकॉज सिर्फ प्रोडक्ट को ये रेफर नहीं करता है. क्रिएटिविटी इट कैन बी एन आइडिया, ए परफॉर्मेंस और एन आर्टिफैक्ट और ए प्रोडक्ट. बट द इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर इज क्रिएटिविटी में इट हैज़ टू बी मेड बाय ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग किसी के पास कॉन्शियसनेस है नहीं ऑन दिस अर्थ. अगर कुछ न्यू चीज़ें बन भी जाता है बाय ए मशीन, देन ऑल्सो विल नॉट से इट क्रिएटिव. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वाटर ड्रॉपलेट गेट्स फ्रीज अराउंड एंड टेक्स ए वेरी डिफरेंट एंड न्यू शेप which looks aesthetically valuable, अच्छा लगेगा आपको देख के. जैसे कि रेफ्रिजरेटर में एक वाटर ड्रॉपलेट ने एक शेप ले लिया which is very interesting and very impressive, but will we say it creative? No, because it is made by a machine. Same is applicable for artificial intelligence. Using artificial intelligence, great artworks are being performed. काफ़ी इम्प्रेसिव आर्टवर्क्स बन रहे हैं, देख के ही लगेगा ओ इट्स डिफरेंट. बट विल वी से इट क्रिएटिव? नो, बिकॉज इट इज मेड बाय ए मशीन. कंप्यूटर इज ए क्रिएटिव प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर इज ए क्रिएटिव प्रोडक्ट, बट दे डोंट हैव क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही है, विच वी ऑलरेडी नो. बट हियर इन दिस वीडियो we will discover when this enters into the brain, when this creativity enters into the brain. क्योंकि ये हमको जानना बहुत interesting. Don't you think it is interesting? क्योंकि there are billions of people, only few are creative. So why not everyone is creative? Don't you think it's an interesting question? So maybe in this discussion we might find a solution towards this idea. Let's see. So how this, yes, the question is how this creativity enters into the mind and when. Because the creators, when we say creators, here we normally it refers to scientists, psychologists, philosophers, physicists, statisticians, economists, poet, anyone from this category. We consider they are creators, creative people. They have admitted that ये जो new idea, new thought है, it suddenly enters into the mind like an eureka, like from the unknown, from nowhere, like just somebody gave it to you. And it happens sometimes when they are daydreaming, while working alone, suddenly the idea comes. They have admitted it. So from where this creativity comes? That is the question. So the Greek people, the ancient Greek, they used to be intelligent people, and they have a thought on this. They say it's a divine inspiration. It's a divine inspiration that directly comes from the God or muse. भगवान के पास से आ जाता है सीधा सीधा. In our religion as well, we believe creativity is not a cup of tea. Like everyone cannot be creative. There are only few people. And they are God gifted. ये भी हम मान के चलते हैं. But science have a different take on this. Because science always, they have a scientific observation to understand things. They always have a pragmatic and empirical approach to understand things.
सो साइंस जितने भी आज तक डिस्कवर किया है, सो फार द रिसर्च सेज, दे से दिस क्रिएटिव, they attribute this success of creative to the unconscious mind. They say it is the operation of unconscious mind by using the stored data by the conscious mind. So क्या होता है, जब जो conscious mind है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम conscious mind में कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं और जो भी हम सोच रहे हैं, वट एवर इज हैपनिंग इन आवर माइंड, दैट इज डन बाय द कॉन्शियस माइंड, और ये सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है. एंड थॉट्स ड्रिफ्ट्स, एक थॉट से दूसरा थॉट पे माइंड, कॉन्शियस माइंड मूव होता ही है. तो ये जो मूव होता है, द कॉन्शियस माइंड व्हेन इट ड्रिफ्ट्स फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, maybe might be at this point the unconscious mind manipulates the stored data, it alters, it modifies, and it gives a solution, and which surfaces the conscious mind. तो इसीलिए ऐसा लगता है कि सडनली कहाँ से, like somebody just gave it to you, the idea suddenly enters into the mind. तो ये डिस्कवरी है, ये ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च है साइंस का. दिस कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड. अगर हम एक लेमन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, इफ समथिंग कम्स फ्रॉम गॉड का जो मीनिंग है, एंड समथिंग कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस, मेरे हिसाब से उसमें कुछ डिफरेंस मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड इज समथिंग विच वी डोंट नो, बट साइंस सेज इट कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड. बट यस, फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड, बट when there is conscious effort and there is knowledge, if knowledge and conscious effort both are there, then only there is chance of creativity, and maybe the unconscious mind, by manipulating the data, gives the person that creativity. The important thing for us is conscious effort and knowledge is important. And in coming years, if psychology, philosophy, neuroscience, cognitive science, the researchers from all these departments, they come together